Hello guys, today we're gonna discuss about few maths questions जो commonly interviews में पूछे जाते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो के अलजेब्रा और बहुत ही टेक्निकल मैथमेटिकल और कैलकुलस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस लाइक जनरलाइज क्वेश्चन बट ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा आपकी जॉब डिटेल क्या है डिपेंडिंग ऑन दैट बट इन नॉर्मल interview these are the few maths question which interviewers can ask. So let's get started and see what kind of a question that could be possible. So I think I'm going to start with the first question. Okay, so this is the first question which can be asked by the interviewer, that what kind of tools we used in maths. Fairly easy. So this is not a technical, like very calculative kind of a question, or it's not like that they are asking some formula or something. It's very common question, or you can say general question. So क्या हो सकता है, क्या tools हैं जो maths में use होते हैं? So इसका आंसर बहुत कुछ हो सकता है, but I think आप इसका आंसर दे सकते हो like x square, compass, uh, there are lots of things, scale for the measurement, etc., etc., and you can elaborate your answer accordingly so that you can satisfy the interviewer. And the second most common question which is asked in many interviews, and जिसको देख के बच्चे काफी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या बोलें क्या ना बोलें, तो इसका प्रिपेयर कर लेना चाहिए आपको. तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इट्स अ जनरल. तो वो पूछते हैं आपसे कि डू यू enjoy numbers, एंड वो आपसे पूछ लेंगे क्या आप नंबर एंजॉय करते हो, और उसके बाद पूछ लेंगे व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू एंजॉय सॉल्विंग. सो दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दे कैन आस्क, और जो डिपेंडिंग ऑन, तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कोई एक टॉपिक जिसके बारे में आप बता सको. और जब वो आपको बोलेंगे कि कौन सी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में मजा आता है, तो वो उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन दे सकते हैं. तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है. और एक वेरी इजी जिसके बारे में आपको घबराना नहीं चाहिए, वेरी इजी बट वेरी पॉपुलर, वो है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैथ्स आर देयर, मैसी आर देयर. तो इसका आंसर क्या हो सकता है? वेरी इजी, फेली इजी. आई मीन यू कैन एलाबोरेट योर आंसर ऑब्वियसली, बट अलजेब्रा, calculus, trigo, etc., and you can also elaborate your answer accordingly depending upon the type of interview you are applying for. उसके बाद ये क्वेश्चन, ये बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन है और हर बंदे का आंसर अलग हो सकता है इसमें. ये एक वेरी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से इंटरव्यूअर्स को मजा आता है क्वेश्चन पूछने में. वो ये पूछते हैं हाउ डू यू यूज मैथ्स इन योर डेली लाइफ. तो इसका जो आंसर है वो कोई एक आंसर नहीं हो सकता, इट्स अ सब्जेक्टिव आंसर. सो आप इसको एलाबोरेट कर सकते हो, लाइक इन you can give example like when we go for a shopping we can calculate the discount, or all this sort of a thing quickly if you are using the maths, and all this sort of a problem. और वो क्या पूछ सकते हैं, और वो आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम टाइम एंड डिस्टेंस, और वो आपको दे सकते हैं परसेंटेज निकालने के लिए. इस पे हम मैं पूरा एक प्रॉपर लेक्चर बनाऊंगा
जिसमें आपको पता चलेगा कि जल्दी से परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाइक इन अ माइंड, क्विक। और पूछ सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाइक अ नॉर्मल डे टू डे सिचुएशन, इतने रुपए में ये खरीदा तो कितने का प्रॉफिट हुआ, समथिंग लाइक दैट। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो ये तो कुछ बहुत ही बेसिक और कॉमन क्वेश्चन है विच इज फेयरली लव्ड बाय ऑल द इंटरव्यूअर। बहुत उनको मजा आता है इस टाइप के क्वेश्चन पूछने में, तो आपको रेडी रहना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में। और एक मैं आपको एक और क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन है, तो ये लोग पूछते हैं, वो मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ही ईजी है और उसको मैथ्स क्वेश्चन कहना भी नहीं चाहिए, उसको आईक्यू क्वेश्चन कहना चाहिए मेरे हिसाब से। वो ऐसे है जैसे 1 plus 4 equals to 5, 2 plus 5 equals to 12, 3 plus 6 equals to 21, 8 plus 11 what? I'm sure बहुत से लोग आप में से ऑलरेडी आंसर इसका दे चुके हैं बिकॉज इट्स वेरी इजी। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। चलो देखते हैं एक तरीका इसका जो कि बहुत इजी है, ऑलरेडी आप आंसर कर पा रहे हैं। वो होगा 1 into 5 equals to 5, 2 into 6 equals to 12। तो आपको समझ आ रहा है ये जो सेकंड डिजिट है, ये वाला जो सेकंड डिजिट है, इसमें +1 करके फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। 1 into 5, 2 into 6, सिमिलरली 3 into 7, 21, एंड इसका क्या होगा फिर 8 into 12, 96। So this is one way of doing this, और obviously they're not going to ask you the second way, but अगर आपको जानना है इसका second way कैसे होगा तो हम देख लेते हैं। Suppose this is first way to solve this kind of a question. Let's see the second, which is not necessary, लेकिन मैं बता ही देता हूँ। वो ऐसा होगा 1 plus 4, excuse me, 1 plus 1 into 4 equals to 5। I think अब आप guess कर पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। 2 plus 2 into 5 equals to 12, 3 plus 3 into 6 equals to 21, and similarly 8 plus 8 into 11 equal to 96। ये सेकेंड वे है, और इसमें आपको आई एम श्योर समझ आ गया होगा क्या हो रहा है कि फर्स्ट डिजिट तो सेम ही रह रहा है, पर फर्स्ट और सेकंड डिजिट में 1 - 1 करके मल्टीप्लाई किया जा रहा है, प्लस कर दिया जा रहा है। 2 - 5, 2, 6 - 1, 5, 12, this second way। तो these are the few questions, very common questions जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। and best of luck for your interview if you are going for the interview, and be sure to be aware about your job details, whatever your job details would be. Just be sure that you are completely aware and prepare your interview according to your job detail. And also, yeah, one more thing I forgot to mention, which I think profit and loss, and you can also get questions from partnerships. It's a topic, partnerships. इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, वो पूछा जा सकता है। And then I think you are fairly prepared. So I hope you have learned something from this video. And sorry, oops. I'll see you in the next video with another interesting topic, and I hope you learned something. So till then, take care.